Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 14th lecture of this series of CPC. So in this lecture we would start with section 21A. So they are saying no suit shall lie. No suit shall lie challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title or any ground based on an objection as to the place of suing. अब देखो ये इसके प्रॉपर तो तब समझ में आएगा जब आप रेस जुडिकाटा पढ़ोगे बिकॉज इसके जो एलिमेंट्स है सेम टाइटल एंड ऑल दैट इज रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा बट फॉर राइट नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री पास्ड इन ए फॉर्मर सूट। अभी तो आप लेमैन की तरह समझो इसको। मान लो ए ने बी पर एक कोर्ट में कोई सिविल जज है उसके कोर्ट में सूट किया। The suit was heard and on merits it was decided and the decree was passed. The suit was heard and finally on merits decree was passed. So the suit is decided or not. A former suit decided हो गया, ये पहले suit file हुआ and was decided. So the former suit has been decided on the merits. So they are saying no suit shall lie challenging the validity of a decree. मतलब ये जो decree pass हुई है इसकी वैलिडिटी की बात हो रही है। नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिक्री पास्ड इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। मतलब पार्टीज ए और बी है। अब दोबारा मान लो इस डेट पर फिर से ए ने बी पर सूट कर दिया या फिर उल्टा कर दो बी ने ए पर सूट कर लिया। अब दोबारा सूट हुआ तो ये कौन सा सूट है? ये सब्सिक्वेंट सूट है एंड दिस इज अ फॉर्मर सूट। अब दे आर सेइंग दैट कि ये जो दोबारा सूट किया ए ने बी पर या बी ने ए पर, इस सूट में उसका कहना है दैट दिस डिक्री वाज रॉन्ग। अब इस डिक्री को चैलेंज करके ही सेज कि दोबारा ट्रायल करो। ही चैलेंजिंग द डिक्री एंड सेज claims that the trial should be conducted again because the former court did not have jurisdiction. So that is what we are talking here. So no suit shall lie challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. तो अभी आप इन टर्म्स को मत सोचो, सेम पार्टीज अंडर whom litigating ये सब अभी मत सोचो, आप थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में समझो इसको। ये टेक्निकलिटीज हैं जो कि आपको रेस जुडिकाटा के समय समझ में आएगा। तो लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। तो प्लेस ऑफ सुइंग के ऑब्जेक्शन के ग्राउंड पर आप पिछली डिक्री को चैलेंज नहीं कर सकते। अब प्लेस ऑफ सुइंग का टेक्निकल जनरल मीनिंग तो होता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, लेकिन 21A में प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब दोनों होगा, टेरिटोरियल एज वेल एज पेक्यूनरी। 21A में इट इज नॉट ओनली टेरिटोरियल, 21A में इट इज नॉट ओनली टेरिटोरियल क्योंकि टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, सो इट इज टेरिटोरियल और पेक्यूनरी। और अगर आप 21 में देखो, अगर आप सेक्शन 21 में देखो, जो प्लेस ऑफ स्विंग क्लाउज 1 में लिखा है, दिस प्लेस ऑफ स्विंग दैट इज टेरिटोरियल, बट हियर दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड पेक्यूनरी, तो आपको पेक्यूनरी साथ में पढ़ना पड़ेगा। सो द वर्ड प्लेस ऑफ स्विंग इंक्लूड्स टेरिटोरियल एज वेल एज पेक्यूनरी फॉर द पर्पज ऑफ 21A। तो सिंपल लेमैन लाइक मीनिंग क्या निकल के आया? सिंपल लेमैन लाइक मीनिंग जो इसमें निकला वो ये है कि अगर ए ने पहले सूट कर दिया था बी पर ऑन सम टाइटल ऑन सम लीगल कैपेसिटी with respect to some subject matter and the court has already heard and decided that suit on merits, now is not satisfied with the decree because it finds that the trial court did not have the territorial or pecuniary jurisdiction. So what he does is he again file the suit. अब जब कोर्ट ने एक बार मेरिट्स पर डिसाइड कर दिया है, then you must appreciate सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा अप्लाइज। अब उसी टाइटल पर उन्हीं पार्टीज के बीच या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच दोबारा सूट हो रहा है और जिस टाइम
is challenging the earlier decree in this suit. अब देखो मान लो ए ने सूट किया यहाँ पर, जैसे ही ये सूट करेगा तो बी ऑटोमेटिकली रेस जुडिकाटा का प्ली लेगा कि नहीं, बिकॉज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर बिटवीन सेम पार्टीज द सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड and therefore the second suit is barred by the res judicata. So B will take the plea. Now A takes the defense that no res judicata will not apply because the former court did not have the territorial or pecuniary jurisdiction. Now what 21A says indirectly कह रहे हैं कि res judicata still applies even if the former court did not have the pecuniary or territorial jurisdiction. अब ये ऑब्जेक्शन आपको इस कोर्ट में रेज करना चाहिए। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने सूट ए से फाइल करवाया लेकिन उल्टा होगा, बी ने ए पर सूट कर दिया, उसी कॉज ऑफ एक्शन पर, उसी टाइटल पर बी ने ए पर सूट कर दिया इस ग्राउंड पर के पिछले कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था। तो आप इसको दोबारा सुनिएगा। और ए का कहना है कि पहले डिसाइड हो चुका है तो रेस जुडिकाटा लगेगा, और ए का कहना है कि पहले डिसाइड हो चुका है तो रेस जुडिकाटा लगेगा, और बी का कहना है कि पहले कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था तो रेस जुडिकाटा कैसे लगेगा। तो द आंसर इज 21A सेज कि एक बार अगर डिसाइड हो गया, आपको अगर ऑब्जेक्शन रेज करना था तो आप उसी ट्रायल कोर्ट में करते, उसके खिलाफ अपील में जाते जैसे हम 21 में करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर 21 वगैरह नहीं किया फॉलो, बल्कि आप डायरेक्टली दोबारा सूट कर रहे हो, देन दैट विल नॉट बी परमिसिबल। So read it once again. No suit shall lie challenging the validity of a decree based on a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title on any ground based on an objection as to the place of suing. अब इसमें पहले तो टर्म्स देखो आप, they are saying no suit shall lie challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties. What they are saying, a decree has been passed in a former suit. What is meant by former suit? A suit which has been already decided. A suit which has been already decided. अब उसको नीचे explanation में explain भी कर रहे हैं. The expression former suit means a suit which has been decided prior to the decision in the suit in which the validity of the decree is questioned, whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned. Now suppose A files a suit against B on this day and the suit is pending. If the B files a suit against A, say on this day, अब this suit is decided here. अब यहाँ पर ये जो सूट है ऊपर वाला, that is still pending. अब पहले कौन सा वाला सूट फाइल हुआ था, 1 या 2? नंबर 1, suit 1 was filed first, but still the former suit will not be the suit 1. That suit which has been decided first, irrespective of that when it was instituted. जो सूट पहले डिसाइड हुआ था बेशक वो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ हो, and in this the second suit has been decided first. This will be called the former suit for the purpose of this section. आप explanation फिर से एक बार पढ़ो. The expression former suit means a suit which has been decided prior to the decision in the suit in which the validity of the decree is questioned, whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned. Now you see, this is the suit number 1, in which the validity of the decree is questioned. Now obviously ये पहले से तो क्वेश्चन नहीं होगा, जब ये डिसाइड हो गया उसके बाद ही क्वेश्चन रेज होगा. अब this second suit was decided first even though it was instituted later, but since it was decided first, अब in this first suit the validity of decree is questioned now. The validity of this decree is questioned now in the first suit. ये decree हो गया जब, उसके बाद in the first suit you are questioning the validity of the decree
which suit will be called the former suit. The second suit, even though it was instituted, even if it was instituted later. So I was said that they are saying there was a decree. They are saying that there was a decree in a former suit between the same parties. Decree passed in the former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them litigating under the same title. ये जो पार्ट है ये अभी नहीं समझा सकता मैं, रेस जूडिकाटा में समझाऊंगा। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, बिटवीन पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर देम, लिख लो आप इसको। इसको थोड़ा सा भी समझ लेंगे बट डिटेल्स बाद में समझेंगे। रेस जूडिकाटा, देन दे आर सेइंग द पार्टीज शुड हैविंग द सेम टाइटल। Your title I had already explained to you once, and the details I will be discussed in res judicata. Litigating under the same title. Litigating under the same title on any ground based on an objection as to the place of suing. Means जो आपने second suit फाइल कर रखा है उसमें you are challenging the decree of the former suit on the ground that the former court did not have jurisdiction. Means the place of suing, literally it means territorial jurisdiction. Lekin in this section you have to read it widely, and it will include territorial as well as pecuniary. So the objection is territorial or pecuniary jurisdiction, means lack of territorial or pecuniary jurisdiction of which court? Of the former court. अब 21 और 21A को दोनों को मिलाकर देखो अगर आप, when you understand 21A in the light of 21 में आपको रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर लागू हो? अपलेट या रिविजनल प्रोसीडिंग्स में। तो पहले ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अगर ट्रायल कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया, सूट डिसाइड कर दिया, तो अपील में या रिवीजन में आपको रिलीफ तभी मिलेगा जब कंडीशंस ऑफ 21 आर फुलफिल्ड। और यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट अपील और रिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बार सूट डिसाइड हो गया है और आपने दोबारा सूट फाइल कर दिया या पहले से फाइल कर रखा है और उसमें आप कह रहे हो कि उसमें डिसाइड करो आप फिर से, क्योंकि द फॉर्मर कोर्ट डिड नॉट हैव द जुरिडिक्शन पेक्यूनरी और टेरिटोरियल। तो बेसिकली वंस द कोर्ट हैज डिसाइडेड द सूट मीन्स द डिक्री, अब उसके बाद देयर आर टू थिंग्स आर पॉसिबल, यू गो इनटू द अपील or revision, and there you challenge the decree on the ground that this court had a lack of pecuniary or territorial jurisdiction. So this is already covered by section 21. Or the other option is that you file a fresh suit, and in this suit when the opposite party raises an objection of res judicata, then again you challenge the former decree on the ground of pecuniary or territorial, on the ground of lack of pecuniary or territorial jurisdiction. Now suppose A has filed a suit against B, डिग्री A के फेवर में हो गई, डिग्री वॉज इन फेवर ऑफ A, अब B ने उसी सब्जेक्ट मैटर पर उसी टाइटल पर A पर दोबारा सूट कर दिया। अब जब A रेस जुडिकाटा का पॉइंट उठाता है, then the B says that the former court did not have the pecuniary or territorial jurisdiction, and therefore that decree is not binding and the suit must be tried again. So this issue is addressed under section 21A, and in this case they are saying that that will not be a ground for challenging the decree. Mere lack of pecuniary or territorial jurisdiction in the former trial court cannot be a ground for challenging the decree in the subsequent suit. Now that may be a subsequent suit filed after the decree, or that may be a suit which is filed already and now the decree in the other suit have been filed. अब जैसे मान लो एक सूट चल रहा था, अब बी ने साथ साथ एक अलग सूट कर दिया ए पर सेम मैटर में, जब ये सूट भी पेंडिंग है और इस डेट पर जब ये डिग्री आ गई, मान लो इस डेट पर ये डिग्री आ गई और उसके बाद इसने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा दिया,
क्योंकि जैसे ये डिग्री आएगी ये वाली, तुरंत दूसरे सूट में पार्टी रेस जुडिकाटा का प्ली लेगी, that the already suit has been decided. So this present suit is barred by the res judicata, and there the opposite party may raise the objection that the former court did not have the pecuniary or territorial jurisdiction. So can be this case, or maybe the after the decree has been passed, then the B filed the suit, then also the same thing happens. So what I am saying is that कि जो सेकंड सूट है वो पहले सूट के पैरेलल भी फाइल हो सकता है या पहले सूट के डिक्री के बाद भी फाइल हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। डिक्री एक बार हो गई, देन द पार्टी कंसर्न विल रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा, एंड द पार्टी हु इज इंटरेस्टेड ही विल रेज द प्ली ऑफ lack of pecuniary or territorial jurisdiction. And 21A clearly says that lack of pecuniary or territorial jurisdiction cannot be make a ground for contesting a fresh suit. अगर ज़्यादा है तो आप अपील में जाएं, रिवीजन में जाएं और वहाँ पर सेक्शन 21 के कंडीशंस फुलफिल कर दें, देन द डिग्री विल बी सेट असाइड। लेकिन कोलैटरल प्रोसीडिंग्स मतलब पैरेलल सूट या सब्सिक्वेंट सूट, इसमें आप ये प्ली नहीं उठा सकते। ओके, समझ में आया? अब इसको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप 21 का पॉइंट फिर से देख लो। देखो यहाँ पर सूट फाइल हुआ, देयर वाज अ डिग्री पास्ड, आफ्टर द डिग्री द पार्टी कंसर्न्ड द डिफेंडेंट गोज इन अपील और रिवीजन, एंड देयर ही रेजेस द प्ली ऑफ lack of pecuniary or territorial jurisdiction, and therefore the decree shall be set aside. The decree will be set aside as per 21 only when number 1 he has raised the objection in the trial court at the time of the settlement of issue or before that, and plus he has suffered a failure of justice because of lack of jurisdiction. So plus he has suffered the failure of justice because due to the lack of jurisdiction. So that is there it will be allowed. Otherwise, mere lack of pecuniary or territorial jurisdiction cannot be a ground of setting aside of the decree even in the appeal or revision. तो ये तो सबको क्लियर है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में what they are saying is, if the suit is filed here, what they are saying is, if the suit is filed here and decree is passed here, now there can be two situations. A has filed a suit against B. While this suit is pending, B files the same suit against A. कर सकता है कि जैसे एक मकान का ओनरशिप है, ये कहता है इन द टाइटल दैट आई एम द ओनर, और बी यहाँ पर कहता है दैट आई हैव द टाइटल आई एम द ओनर। तो उस तरीके से बी उल्टा सूट कर सकता है। बी फाइल्ड अ सूट हेयर। वैसे तो अब इस सूट पर एज सब जुडिस लगना चाहिए सेक्शन 10 में, दिस सूट बी स्टेड, बट दैट इज नॉट 100% मैंडेटरी। अब सपोज द सूट इज पेंडिंग, अब रेस्ट सब जुडिस में डिस्कस नहीं कर रहा, सपोज द सूट इज पेंडिंग, अब हेयर दिस डिक्री इज पास्ड। अब जैसे ही ये डिक्री पास होगी, मान लो डिक्री पास हो गई इसमें, अब जैसे ही ये डिक्री पास होगी तो तुरंत ए इसमें दूसरे सूट में, क्योंकि ए के फेवर में हुई पहले वाली में डिक्री पास, तुरंत ए अब दूसरे वाले के इसमें सूट में रेस जुडिकाटा का प्रयोग करेगा, दैट दिस सूट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड इन द फॉर्मर कोर्ट एंड देयरफॉर दिस प्रेजेंट सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। बताइए समझ में आए? अब जैसे ही इन्हें रेस जुडिकाटा का प्ली उठाया, बी रेजेज द ऑब्जेक्शन। अब बी का ऑब्जेक्शन है दैट दिस रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई बिकॉज दिस डिक्री इज नॉट वैलिड। Why not valid? Because this court does not have pecuniary or territorial jurisdiction. Will this court allow that objection and despite this decree go ahead with the trial as per 21A? Answer is no. तो वही बता रहा था मैं कि या तो उसने पैरेलल में सूट कर रखा था, और या फिर ऐसा भी हो सकता है इन्हें सूट किया बी के ऊपर और डिक्री यहाँ पर आ गई इन फेवर ऑफ ए। अब बी ने उसके बाद उसी कोर्ट में या किसी और कोर्ट में बी ने ए पर उसी मैटर के लिए सूट कर दिया,
अब जब इसने सूट किया इन द WS, A raises the objection of res judicata that the suit has been already decided between the same parties and the same title, etc. Res judicata will apply. The matter in issue, all things are same. Now when A raises the plea of res judicata, again B's reply is, B का reply जो है, that is, reply is that there was lack of pecuniary or territorial jurisdiction in this court. Will this objection of B is sustained, or will this suit be hit by the res judicata? Now the answer is that it will be hit by the res judicata, and the objection of the pecuniary and territorial jurisdiction is not be sustained. So that is what 21 says so. तो अब ये जो सूट है जो आपने या तो पैरेलल में कर लिया या सूट डिसाइड होने के बाद में दोबारा में कर दिया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोलैटरल प्रोसीडिंग्स। ये हमेशा याद रखना कि एक सूट डिसाइड होने के बाद अब दोबारा आप कोई सूट कर देते हो या सूट डिसाइड होने के दौरान आप पैरेलल में एक और सूट कर देते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोलैटरल प्रोसीडिंग्स। हमेशा ध्यान रखना ये, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल प्रोसीडिंग्स। और अपील या रिवीजन का जो प्रोसीडिंग्स होगा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। अपील एक्सेट्रा विल बी कॉल्ड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, अपील रिवीजन। तो ये टर्म आपको बता रहा हूँ, आगे काम आएंगे। फ्रेश सूट अगर फाइल किया या पैरेलल सूट फाइल किया, एक सूट होने के डिसाइड होने के बाद फ्रेश सूट फाइल किया या फिर उसी के पैरेलल कोई सूट फाइल किया, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल प्रोसीडिंग। एंड इफ यू गो इन अपील रिवीजन एक्सेट्रा, एग्जीक्यूशन रिव्यू, अपील रिवीजन एग्जीक्यूशन रिव्यू, ये जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं दे ऑल आर कॉल्ड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स because they are incidental upon the suit. And this fresh suit is a totally fresh proceeding that is called parallel or collateral proceedings, even if it is filed after the decree. So what 21 talks about is that in incidental proceedings, appeal and revision, you can have that only when the conditions of section 21 are fulfilled. And what 21A talks about is that in the case of lack of pecuniary or territorial jurisdiction, if you file collateral proceedings, then you do not have any relief merely because there was a lack of pecuniary or territorial jurisdiction. वहाँ पर इनफैक्ट फेलियर ऑफ जस्टिस वगैरह भी नहीं अप्लाई होगा, पर से सेकंड सूट विल बी बार्ड। जबकि अपील वगैरह में फेलियर ऑफ जस्टिस, रेजिंग द इशू बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशूज एक्सेट्रा, वहाँ पे फिर भी आप सेटिस्फाइड करा सकते हो, लेकिन कोलैटरल में आपके पास वो रिलीफ भी नहीं है। कोलैटरल में आपके अलाउड नहीं होगा। आपको चाहिए था, अगर आपको चाहिए था मुझे ये डिक्री सेटिस्फाइड करवाना है, तो आपको फ्रेश सूट फाइल नहीं करना चाहिए था, आपको अपील या रिवीजन करना चाहिए था। समझ आया? तो these two sections make the things comprehensive. Means you can say that these are two complementary to each other. One is talking about incidental, where you have some relief, and other is talking about collateral, where you do not have any relief, merely on the ground of territorial or pecuniary jurisdiction. Understood? अब इसको लिख लीजिए आप, right? Section 21 is a provision complementary to 21. If there was a lack of pecuniary or territorial jurisdiction in the trial court, 21 relates to the incidental proceeding of appeals and revision, wherein the relief is allowed. Relief means what? Setting aside of the decree. Relief of setting aside of decree. So wherein the relief is allowed only when the two conditions of section 21 are fulfilled. Only when the two conditions of section 21 are fulfilled. Only when the two conditions of section 21 are fulfilled. Section 21A relates to the collateral proceedings filed either after the former suit has been decided or filed while the former suit was pending.
no relief has been allowed in such collateral proceedings if the former court has decided the suit on merits, and it did not have pecuniary or territorial jurisdiction, then the only alternative available for the affected party was to go in appeal or revision. He cannot file a fresh suit and claim a setting aside of the former decree merely on the ground of lack of pecuniary or territorial jurisdiction. Rather, the former decree will bar the subsequent suit on the ground of res judicata, section 11 of CPC. अब ये टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम मेंस एंड पीटी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। तो इंटरव्यू में ऐसे अक्सर पूछते हैं ऐसे सवाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 21A। अब अगर आपने आइसोलेट करके बताया तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपने दोनों को कंपेयर करके बताया देन दैट इज अ बेटर आंसर। तो 21A पे अगर सवाल पूछे तो आप 21 का रेफरेंस दो थोड़ा सा, और 21 पे अगर सवाल पूछें तो 21A का रेफरेंस दो थोड़ा सा, just to say that these two provisions are comprehensive. So hope you have understood 21A. And as far as 21A is concerned, 21 में जो issues थे, 21 में एक तो issue था that there is lack of territorial or pecuniary jurisdiction in the trial court, and you had gone in the appeal or revision, and there you are challenging the decree of the trial court, and the challenge will be allowed only when you prove that I have raised the objection at or before the settlement of issues, plus there was a consequent failure of justice due to the lack of jurisdiction. There was a failure of justice. इसमें the first thing I have discussed with you, the issue was that section 21 talks about appellate and revisional proceeding, which does not provide for as to when you can raise the objection in the trial court. When the objection can be raised in the trial court, इस पर ऐसा कोई मैंडेट सेक्शन 21 नहीं डालता, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि सेटलमेंट ऑफ इशूज के समय या उसके पहले अगर रेज नहीं किया था तो अपील या रिवीजन में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रायल कोर्ट में हमेशा सेटलमेंट ऑफ इशूज के पहले रेज करो, रिलीफ नहीं मिलेगा फाइन अपील या रिवीजन में, लेकिन ट्रायल कोर्ट में आप सेटलमेंट ऑफ इशूज के बाद भी बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। एक ये पॉइंट था, और दूसरा ये पॉइंट था कि मान लो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया ट्रायल कोर्ट में और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया दैट इट हैज ज्यूरिडिक्शन। अब कोर्ट में आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में गए, द कोर्ट हैज पास द ऑर्डर दैट इट हैज ज्यूरिडिक्शन एंड द डिफेंडेंट गोज इन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर। So will section 21 apply at that stage? No, because you have not gone in the appeal against the merits of the case. You have gone in the appeal against the jurisdictional order of the court. So at that stage 21 will not apply. Why it will not apply? Because at that stage merits of the case will not be decided, and therefore there is no occasion of failure of justice. तो एक दूसरा इश्यू ये था। अब third issue that we discussed was that suppose there was an order regarding jurisdiction and you did not go in appeal against that, उसके खिलाफ आप अपील में नहीं गए, अब यहाँ पर मेरिट्स पर केस डिसाइड हुआ है and now you go in appeal against that. अब now will the fact you will not appeal against the order play a negative role, and will you be denied a relief under 21? The answer is no. अब आपका डिस्क्रिशन है, आप अपील में नहीं गए, कोई बात नहीं। Here you can still raise the objection, you can file the appeal, and here failure of justice, if failure of justice is proved, you will still get the relief. अब और क्या था? One more issue was section 99 और 21 का correlation. Now the point is that 99 में they are saying that if there was an error due to which there was a lack of jurisdiction, then the appellate court may
set aside the decree or reverse the finding. The appellate court may set aside the decree or reverse the finding or reverse the decree. And the 21 says that the appellate court will not set aside the decree unless the two conditions are fulfilled. So in the Karan Singh versus Chaman Paswan, the objection was raised that is it not that 99 and 21 are opposed to each other, because 99 says that you have to set aside the decree and 21 says that you cannot unless these two conditions are proved. So there the Supreme Court says that there is a complementarity between the two, because 99 is not saying that you shall set aside the decree. 99 is only an enabling provision and 21 is a prohibitory provision. In the sense 21 says that you cannot set aside the decree unless these conditions are fulfilled. अब enabling है और साथ में conditions डाला है, तो दोनों को आप complementary form में पढ़ोगे कि आप डिक्री सेट असाइड कर सकते हो लेकिन 21 के अनुसार। 91 कहता है कि डिग्री सेट असाइड कर सकते हो लेकिन 99 कहता है कि आप डिग्री सेट असाइड कर सकते हो लेकिन 21 का ध्यान रखना पड़ेगा। और 21 कहता है कि जब तक ये दो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तब तक डिग्री सेट असाइड नहीं होगा। एंड देयरफॉर देयर इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन दीज टू प्रोविजंस एंड नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, एंड यू हैव टू रीड 99 टुगेदर विद सेक्शन 21। तो यही इश्यूज थे 21 में और 21A भी आपने देख लिया। I hope these both two are clear to you. Now see section 22. See, where a suit may be instituted in any one of two or more courts. Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts. Any defendant after notice to the other parties may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made after considering the objections of the other parties, if any, shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. Now here you see what they are saying is, where the topic is shifted, they are talking about the transfer of suits. जब आपने पढ़ा है 1620 वगैरह पढ़ लिया, you know that the plaintiff is having the option of filing the suit at several places. Suppose this is the cause of action, this is the residence, this is the work, this is the place of business, तो उनमें से किसी भी जगह पर वो सूट फाइल कर सकता है। अब मान लो प्लेंटिफ ने कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह पर सूट फाइल कर दिया, अब डिफेंडेंट वांट्स दैट नो वहाँ पर मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो आप सूट को मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस वाली जगह पर शिफ्ट कर दो। प्लेंटिफ ने तो अपने राइट में कॉज ऑफ एक्शन पर सूट फाइल कर दिया, बट द डिफेंडेंट वांट्स कि उसको आप सूट को ट्रांसफ़र करो टू दिस प्लेस वेयर द प्लेस ऑफ बिजनेस लाइज। ऑब्वियसली दैट प्लेस ऑल्सो हैज jurisdiction. That place also has jurisdiction. For that you will make an application. Now what section 22 is talking about? Out of several places having jurisdiction, the suit has been filed at one of the places, but the defendant wants the suit get transferred to some other place. Defendant wants to get the suit transferred to some other place, but that place also have jurisdiction. Where the defendant wants to transfer that suit, that place also have the jurisdiction. So there the court will conduct the hearing between the parties, और वो balance of convenience देखकर दोनों का convenience निकालकर that which is the best suitable place for both of them, then the court may order the transfer of the case. तो इसको एक बार फिर से पढ़ो. Where a suit may be instituted in any one of two or more courts. Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts. ठीक, मतलब एक से ज़्यादा कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट हो सकता था और एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो गया. The suit has been instituted in one court. अब एनी डिफेंडेंट, अब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो कोई भी एक
अगर सिंगल डिफेंडेंट है दैट डिफेंडेंट, एनी डिफेंडेंट आफ्टर द नोटिस टू द अदर पार्टीज, आफ्टर नोटिस टू द दैट पार्टी, आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज मतलब दूसरे डिफेंडेंट प्लेंटिफ सबको नोटिस देने के बाद, आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement of issues apply to have the suit transferred to another court. Settlement of issues के पहले या उस दिन you can apply that the suit shall be transferred to another court, और बाद में भी अगर करता है then also the court be liberal, जो 151 जैसे कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था, the court may be liberal and it may allow, and in all cases where issues are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made after considering the objection of the other parties, if any, shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. So basically the point is जो मैंने आपको बताया, the suit is filed at the place of cause of action and the defendant wants the suit to be transferred at his place of business. So the court will conduct a hearing between the plaintiff and the defendant and will examine the balance of convenience between the two, or you can say the forum convenience between the two, and it will decide whether the suit shall be transferred or not. अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या फॉरम कन्वीनियंस कैसे डिसाइड होगा वो बताऊंगा जब 25 पढ़ेंगे। एक बार सारा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लेंगे तब बता दूंगा। सो अभी के लिए कोर्ट विल डू द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन द टू। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो प्लेंटिफ ने यहाँ चूज किया कॉज ऑफ एक्शन पे, अगर सूट ट्रांसफर कर देते हैं तो प्लेंटिफ को कितना नुकसान होगा और डिफेंडेंट को कितना फ़ायदा, और अगर कोर्ट ने सूट ट्रांसफर नहीं किया तो प्लेंटिफ को कितना बेनिफिट और डिफेंडेंट को कितना नुकसान होगा। तो जिसका नुकसान ज़्यादा है और इर्रिपेयरेबल है, कोर्ट विल टिल्टेड इन हिज फेवर, मीन्स whoever is going to suffer greater, his loss is irreparable, the court will tilt in his favor and accordingly it will transfer or either it will not transfer. A main point you have to keep in mind in 22 is that all the courts should have jurisdiction. All the courts should have jurisdiction, मतलब आप नॉन जुरिडिक्शन वाले कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करोगे। तो जैसे ये कोर्ट है इसके पास भी जुरिडिक्शन है और जहाँ आप ट्रांसफर करवाना चाहते हो वहाँ पर भी जुरिडिक्शन है, जहाँ आपने फाइल किया वहाँ भी जुरिडिक्शन है और जहाँ ट्रांसफर करवाना चाहते हो वहाँ भी जुरिडिक्शन है। मीन्स द डिफेंडेंट इज नॉट डिमांडिंग कि किसी नॉन जुरिडिक्शनल वाले प्लेस पर ट्रांसफर कर दें, ही इज डिमांडिंग दैट दिस कोर्ट ऑल्सो हैव जुरिडिक्शन, so you transfer the suit to this particular court which also has jurisdiction. अब एप्लीकेशन कहाँ डालोगे, where will you file the application? अब देखो, the application will not file in the court where the suit is instituted, the application will be filed in the higher court as per section 23. अब आप 23 देखिए, where read section 23, where the several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court. An application under section 22 shall be made to the appellate court, where the several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court. तो application जाएगा उस appellate court में। Where such courts are subordinate to different appellate courts but to the same high court, तो application कहाँ जाएगा फिर, to the high court. Where such courts are subordinate to different high courts, the application shall be made to the High Court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situated. अब देखो ये कह रहे हैं इस तरीके से, देखो आप, दिस इज अ हाई कोर्ट एंड दिस इज अनदर हाई कोर्ट। अब इसके अंदर मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस हाई कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे भी इस हाई कोर्ट के अंदर ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके नीचे। अब
इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे एक सिविल जज है, उसके नीचे सिविल जज है। इसी तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक सिविल जज है और एक और सिविल जज है। Similarly here also one civil judge, another civil judge, and under this also one civil judge, another civil judge. Now what they are saying is, अगर आपको इस सिविल जज से इस सिविल जज के पास ट्रांसफर करवाना है, where will you file the application? In the district court, superior to, because they both are subordinate to same district court, because they are subordinate to same appellate court. तो इन दोनों का appellate court district court is there, तो एप्लीकेशन यहाँ फाइल होगा। अब अगर आपको ट्रांसफर इस सिविल जज से इस सिविल जज के पास करवाना है, अब दीज आर बोथ नॉट सब्जेक्ट टू द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीज आर बोथ सब्जेक्ट नॉट टू द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट दे आर सब्जेक्ट टू सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो सेम है, एंड देयरफॉर द एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड इन दिस हाई कोर्ट। तो एक बार आप देख लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, दीज आर रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, उसको देख लो, फिर थर्ड में बताता हूँ। Where the several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court, an application under section 22 shall be made to the appellate court. Where such courts are subordinate to different appellate courts but to the same high court, the application shall be made to the said high court. ठीक हो गया? Now what they had said was, if you want to get the suit transfer from one civil judge to another civil judge who are subordinate to the same district court, then the application as per clause 1 will lie to the district court, which is common to both. Now if you want to transfer the suit from one civil judge to another civil judge, which are subject to the different district courts but subject to the same high court, then the application will go to the high court. Now if you want to transfer the case from this district court to this district court, since they are both subject to the same high court, they are both subordinate to the same high court, and therefore the application will lie before the high court. एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेम हाई कोर्ट के अंदर है, then the application will lie to the high court. But if you transfer this district courts to this district court, अब ये दो अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर हैं, तब एप्लीकेशन आप कहाँ फाइल करोगे? अब then in this situation what they are saying in third clause is, where such courts are subordinate to different high courts. Now in my example this two district courts are subordinate to two different high courts. Where such courts are subordinate to different high courts, the application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situated. So you have to see कि सूट किस कोर्ट में फाइल हुआ है। मान लो हमारे अनुसार सूट इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ है, तभी तो हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ है उसका जो सुपीरियर हाई कोर्ट है, एप्लीकेशन वहां जाएगा। अब सूट अगर इस वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ है तो एप्लीकेशन कहाँ फाइल करोगे? इस वाले हाई कोर्ट में, और क्योंकि सूट यहाँ पर फाइल हुआ है तो इस वाले हाई कोर्ट में। तो इज दैट फाइन? अब इतना तो आप समझ चुके हो, लेकिन देखो ये जो थर्ड वाला क्लाउज है, दिस थर्ड क्लाउज इज नो मोर एप्लीकेबल। There has been a Supreme Court judgment on the point which says that inter-high court transfer cannot be done by a high court. If you want to transfer the suit from one high court jurisdiction to another high court jurisdiction, then that cannot be done by the high court. That has to be done by the Supreme Court. Upon this there is a case. उस केस का नाम लिखिए आप, थर्ड क्लास पे है ये केस। That is Durgesh Sharma versus Jayashree, that is 2008 Supreme Court। इसमें लिख लो एक सेंटेंस,
right? It was held that section 23 clause 3 is not applicable as the transfer of suits from one high court jurisdiction to another high court's jurisdiction can be done only by the Supreme Court under section 25 and not by a high court. अब इसका रैशनल है, जो लॉजिक है वो लिखवा रहा हूँ, लिखिए आप कि क्यों कोर्ट ने ऐसा कहा, वो लिखिए। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो आप, सेक्शन 23 इज ए प्रोसीड्यूरल provision. Section 23 is a procedural provision relating to the court where the application shall be filed, whereas Section 22, 24, 25 are more substantive. अब है तो ये भी procedural, क्योंकि CPC में तो procedural ही होगा, लेकिन they are more of kind of substantive in nature and they confer the power upon the court. So basically the point is कि आपका जो power conferring provisions है, that is 22, 24 and 25, and 23 is only a procedural declaration कि application आप कहाँ file करोगे. So in that way they are saying that 23 is less important, you can say, as compared to 22, 24 and 25. So that is the first point. अब दूसरा point लिखो आप, second point, the High Court powers are limited only to its territorial jurisdiction, and High Court can pass orders and writs only within its own territorial jurisdiction. On the other hand, the Supreme Court has territorial jurisdiction upon the whole territory of India. Now next point लिखो आप, third point, the order of transfer of a suit from one high court jurisdiction to the other high court jurisdiction is an order incidental beyond the high court's territorial limits. मतलब एक हाई कोर्ट ने अपने jurisdiction से अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल जज के पास, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल जज से ट्रांसफ़र कर दिया किसी और सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, तो यहाँ पर तो आपका jurisdiction था क्योंकि वो आपके सबऑर्डिनेट थे, लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी अदर हाई कोर्ट के jurisdiction वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ, तो आपका जो ऑर्डर है तो वो किसी और हाई कोर्ट के jurisdiction में इंसिडेंटल हो रहा है, so that is not permissible. ब्रैकेट में लिख लो that is not permissible. इसी में लिखो आप, such an order can be passed only by the Supreme Court. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, in 1976, that effect from 1978, Section 25 was amended, but at the same time there was no corresponding amendment to repeal 23 clause 3. तो ये आर्गुमेंट था कि अगर आपको 23 clause 3 को redundant बनाना था तो जब 25 को अमेंड किया तो 23 clause 3 रिपील कर देते, अब नहीं किया मीन्स व्हाट, आप 23 clause 3 को इफेक्ट देना चाहते हो. So that was the contention before the court. तो ये contention लिखवा रहा हूँ that 23 clause 3 was not repealed. It was contended, आगे लिखो, it was contended before Supreme Court that had the intention of Parliament being to make the 23 clause 3 redundant, then it would have repealed 23 clause 3 by the same amendment. It would have repealed 23 clause 3 by the same amendment. Since it has not been done, the contention was that the Parliament intended 23 clause 3 to be effective. So that was the contention raised. Upon this contention, the court held that
that despite the above, a general principle of law cannot be violated. That is, the High Court cannot be given powers which are incidental beyond its jurisdiction, which are incidental beyond its jurisdiction. मतलब आपने रिपील नहीं किया, दैट इज फाइन। तो कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट ने क्यों नहीं रिपील किया, उस पर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जो लीगैलिटी है उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन अपनी टेरिटरी पे होगा, तो इसलिए जरूरी नहीं कि 23 क्लाउज 3 रिपील नहीं हुआ है तो हाई कोर्ट को उसके बियॉन्ड पावर नहीं दे सकते। अब इसके बाद एक और पॉइंट लिखो आप, सेक्शन 22 till 25 Section 22 till 25 are exhaustive in nature, and transfer of suits cannot be done under inherent powers under Section 151. So the meaning is, जब भी ट्रांसफ़र होगा तो जो भी एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं उसके अंदर होगा। अब मान लो कोई एक प्रोविज़न लागू नहीं हो रहा तो कोर्ट अपने आप इनहेरेंट पावर्स में ट्रांसफ़र नहीं करेगी, unless the requirements of 22, 23, 24, 25 etc. 22 till 25 are fulfilled, there will be not be the transfer of civil suits. So is that fine? कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके, अपने इनहेरेंट पावर्स का एक्सरसाइज करके ट्रांसफर ऑफ सूट्स नहीं करेगी। सो दिस पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू 23 क्लाउज 3, दैट इज जनरल काइंड ऑफ प्रोविजन, लेकिन इसके पहले वाले पॉइंट्स दैट आर रिलेट रिगार्डिंग 23 क्लाउज 3। अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, लास्ट पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। Thus by this judgment 23 clause 3 has been rendered redundant। redundant समझते हो आप? ineffective, useless, redu and dnt, and the transfer between one high court to the another high court jurisdiction can be done only by the Supreme Court under the Section 25. Can be done only by the Supreme Court under Section 25. ठीक, तो 23 क्लास 3 में जो लिखा है कि आप एप्लीकेशन डालोगे पहले वाले हाई कोर्ट में जहाँ सूट फाइल हुआ है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल नाउ। एप्लीकेबल इज कि ऐसे केसेस में एप्लीकेशन हमेशा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 25। नाउ टेक आउट सेक्शन 25, 24 बाद में देखेंगे। फर्स्ट वी वुड सी सेक्शन 25। ऑन द एप्लीकेशन of a party and after notice to the parties, on the application of a party and after notice to the parties, and after hearing such of them as desire to be heard, the Supreme Court may at any stage of the proceeding, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the ends of justice. Expedient for the ends of justice. So keywords are expedient for the ends of justice. So keywords are expedient for the ends of justice. तो जब भी ट्रांसफर के लिए आप आंसर लिखोगे तो ये शब्द जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये शब्द लिखा तो 25 में है लेकिन ये 22 में भी लागू होगा, 24 में भी लागू होगा, क्योंकि वो जो है ना फॉरम कन्वीनियंस, that why should the court transfer? The court will transfer only when it finds it is expedient for the ends of justice. So this has to be implicitly read under 22, 24 everywhere. तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, expedient. Expedient means what? Necessary. Expedient मतलब it is necessary for the ends of justice. Expedient for the ends of justice. Now again I am reading it. On the application of a party and after notice to the parties, and after hearing such of them as desire to be heard, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the ends of justice, direct that any suit, appeal or other proceedings be transferred from
from a high court or other civil court in one state to a high court or other civil court in any other state. अब यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं. दिस इज वन स्टेट, इसका ये एक हाई कोर्ट है. दिस इज अनदर स्टेट, इसका ये हाई कोर्ट है. तो स्टेट नहीं, आप हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जिन पे एक ही हाई कोर्ट है. सो यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट. सो फ्रॉम वन हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन टू अनदर हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन. सो सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में ट्रांसफर, या इस हाई कोर्ट के किसी सिविल कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस हाई कोर्ट के किसी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर, दैट विल बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 25. और कब ट्रांसफर होगा? व्हेन इट इज फाउंड दैट इट इज एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस. तो जब एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस डिस्कस करूंगा, तो वहीं पर आई विल टॉक अबाउट द फॉरम कन्वीनियंस. अब सेकंड क्लाउज रीड, every application under this section shall be made by a motion which shall be supported by an affidavit. Now, what is meant by motion? Motion shall be made by a motion means a notice of 14 days has to be given. A notice of 14 days has to be given. जब आप एप्लीकेशन मूव करोगे ट्रांसफ़र का, तो अपोजिट पार्टी को एप्लीकेशन मूव करने के 14 दिन पहले एप्लीकेशन की कॉपी के साथ आप नोटिस सर्व करोगे, और जिस दिन उसको सर्व हो गया उसका 14 डेज के बाद आप एप्लीकेशन मूव करोगे. सो दैट ही मेक्स नेसेसरी प्रिपरेशन. So that is called notice of motion, and plus he has to file an affidavit also regarding the facts that as to why he wants the transfer. Now, clause 3, the court to which such suit, appeal or other proceeding is transferred. अब सिर्फ सूट ट्रांसफर नहीं होता, अपील भी ट्रांसफर हो सकती है. अपील कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड. कोई भी प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो सकता है. इट इज नॉट ओनली कि सूट ही ट्रांसफर होगा. द कोर्ट टू विच सच सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड shall subject to any special direction in order to transfer, either retry it or proceed from the stage at which it was transferred to it. So that is fine. अब मान लो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो फिर उस सूट को जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, दैट कोर्ट कैन कंटिन्यू विद द सूट फ्रॉम दैट स्टेज ओनली, और या फिर से इशू फ्रेमिंग की स्टेज पर जाकर फ्रेश ट्रायल भी कर सकता है. दे कैन गो फॉर अ फ्रेश ट्रायल ऑल्सो. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डी नोवो ट्रायल. तो जब भी आप फ्रेश ट्रायल करते हो, मान लो एक सिविल जज के पास आधा ट्रायल हो चुका है, एविडेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं. अब मान लो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया किसी और कोर्ट में, तो वो कोर्ट उसके आगे के स्टेजेस में ट्रायल कर सकता है, मतलब फर्दर एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है. और या फिर वो चाहे तो वो डायरेक्ट वापस जाएगा इशू फ्रेमिंग की स्टेज पर. हो सकता है फिर से इशू फ्रेम करके फिर से एविडेंस रिकॉर्ड करे. तो फिर से जो सब कुछ होगा, दैट इज कॉल्ड डी नोवो ट्रायल, फ्रेश ट्रायल. देन नेक्स्ट क्लॉज, in dismissing any application under this section, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious. ठीक, मतलब अननेसेसरी एप्लीकेशन, या परेशान करने के लिए आपने एप्लीकेशन डाला था. ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू एनी पर्सन who has opposed the application such sum not exceeding 2000 rupees as it considers appropriate in the circumstances of the case. मतलब यार किसी ने बिना वजह एप्लीकेशन डाला ट्रांसफ़र का, और कोर्ट ने हियरिंग के बाद एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया, ट्रांसफ़र नहीं किया. एंड ऑल्सो द कोर्ट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड विद अ मैलाफाइड इंटेंशन टू ट्रबल द अदर पार्टी और टू डिले द प्रोसीडिंग्स. अब एप्लीकेशन डाल दोगे ट्रांसफ़र का, तो तब तक तो ट्रायल ऑफ द सूट विल बी स्टॉप.
सो आप अगर ऐसा करते हो डिले ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए, अपोजिट पार्टी को परेशान करने के लिए, अगर आपने अननेसेसरली एप्लीकेशन डाला था, देन द एप्लीकेंट विल बी अवॉर्डेड व्हाट, द फाइन कंपनसेशन, कितना, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़। तो उसके ऊपर 2000 तक का फाइन इम्पोज करोगे। फाइन मतलब वो कंपनसेशन देना होगा। वो कंपनसेशन किसको दोगे आप? कंपनसेशन किसको दोगे? हु हैज अपोज द एप्लीकेशन, अपोजिट पार्टी। अब देखिए ये जो कंपनसेशन या अमाउंट 2000 डिसाइड किया गया था, ये इन 77 डिसाइड किया गया था, बिकॉज दिस वाज इंस्टीट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1977। तो उस समय 2000 की अमाउंट काफ़ी होती थी, बट by the change of time the inflation also changed, the money value decreases but the amount remained the same। तो इसमें amendment हो सकता है amount में। और now the next clause, the law applicable to any suit, appeal or other proceeding transferred under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceeding। So that is very important। अब मान लो एमपी के किसी सिविल जज के पास एक सूट पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 25 में ट्रांसफ़र कर दिया उसको दिल्ली के किसी सिविल जज के पास। अब एमपी का जो सिविल प्रोसीडियर कोड है या वॉट एवर सब्सटेंटिव कोड यू हैव, वॉट एवर सब्सटेंटिव लॉ इन एमपी, अब दैट मे बी डिफरेंट स्लाइटली फ्रॉम यूपी का लॉ। सपोज दिल्ली में नहीं किया, यूपी में किया ट्रांसफ़र, तो एमपी का लॉ में भी डिफरेंट स्लाइटली फ्रॉम यूपी का लॉ। अब जैसे सब्सटेंटिव लैंड लॉज होते हैं, यूपी का और एमपी का अलग अलग है। अब जब ये ट्रांसफ़र होके यूपी पहुंच गया, देन विच लॉ विल बी एप्लीकेबल, यूपी वाला लॉ या एमपी वाला लॉ? विच लॉ इज एप्लीकेबल? द एमपी वाला लॉ, बिकॉज इट इज रिटन क्लियरली द लॉ विच द कोर्ट इन विच द सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग वॉज ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड, मतलब फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड। तो जहाँ सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उसका जो लॉ था, दैट लॉ विल बी एप्लीकेबल इन द कोर्ट वेयर यू हैव ट्रांसफर्ड विद रेस्पेक्ट टू दैट सूट ओनली। तो इज दैट फाइन? अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ऑब्जर्व करो। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट यू ऑब्जर्व, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास, डज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर, डज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर कि एक ही हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, एक ही हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। डज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर कि एक ही हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, जैसे ये हाई कोर्ट है तो इसके ज्यूरिडिक्शन में इस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या केस को ट्रांसफ़र कर सकता है? बताइए। दिस इज़ वन कोर्ट एंड दिस इज़ अनदर कोर्ट। कैन द सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस कोर्ट टू दिस कोर्ट? कैन यू डू दैट? अब देखो हम अभी खाली 25 की बात कर रहे हैं, क्या 25 में कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? यू सी इन सेक्शन 25, लैंग्वेज पढ़ो सेक्शन 25 की। सो द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव दैट पावर। सुप्रीम कोर्ट कैन मेक ऑर्डर्स फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन टू अनदर हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। लेकिन एक हाई कोर्ट के अंदर अगर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, देन दैट पावर इज ओनली विद द हाई कोर्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको अगर आप देखें ठीक से, फर्स्ट क्लास देखो, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम as desired to be heard, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the ends of justice, direct that any suit, appeal or other proceedings be transferred from, इधर से ध्यान देना, from a high court or other civil court in one state to a high court or other civil court in any other state। So they are nowhere saying कि आप एक हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कर सकते हो।
So that is very important. और ये मैं आपको CRPC में भी पढ़ा चुका हूँ, सेक्शन 406 में। वहाँ पर भी यही बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास इंटर हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र का पावर है, लेकिन विद इन अ हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में वो हाई कोर्ट ही ऑर्डर पास करेगा, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डू। और आर्टिकल 142 में भी नॉर्मली द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर बिकॉज दिस पावर इज लेफ्ट विद द हाई कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ऑलवेज हैव द पावर in order to do the complete justice, but the Supreme Court always refrained from passing such orders. So एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में पास करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगा, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में पास करने का ऑर्डर, लेकिन उसी हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में अगर ट्रांसफ़र होना है then that order has to be passed by the high court under section 24. अब वेरी एक्सट्रीम केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज हैव द पावर्स। मान लो फंडामेंटल राइट्स वगैरह अगर वायलेट हो रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल 32, आर्टिकल 142, उन सब में द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर्स, बट नॉर्मली द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट डू दैट। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। फाइन। अब एक बात और, सेक्शन 25 में कहीं भी ये नहीं लिखा है, ध्यान देना, सेक्शन 25 में कहीं भी ये नहीं लिखा है, ध्यान देना, 25 में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये जो कोर्ट था, इस कोर्ट से जब आप इस कोर्ट में ट्रांसफ़र करोगे, ऑब्वियसली इंटर हाई कोर्ट, अदर हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, तो दूसरे वाले कोर्ट का भी ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए जिसमें ट्रांसफ़र कर रही है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है 25 में कि जिसका जो ट्रांसफ़र होगा उसमें इसका भी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए। 22 में लिखा है लेकिन 25 में नहीं लिखा है। तो 25 इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो एक कोर्ट जहाँ ज्यूरिडिक्शन का सूट फाइल हुआ है तो वहाँ से किसी और कोर्ट में जब ट्रांसफ़र करोगे तो ऐसा टेक्निकली ज़रूरी नहीं है कि उस कोर्ट का भी ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए। व्हाट ज्यूरिडिक्शन? टेरिटोरियल। तो नॉन टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दैट विल बी मोर क्लियर व्हेन यू रीड सेक्शन 24. So for that you wait for 24. So what I said was 22 की तरह 25 में ये जरूरी नहीं है that the transfer should be done only in the court which has the territorial jurisdiction. The transferee court, even it does not have the territorial jurisdiction, but if the Supreme Court finds it to be a suitable court, the court can make the transfer. So this point to be repeated when I came to section 24. So that's it for this section 25. We would continue 24 in the next lecture. Thank you.